Hello bachcho, let's see the question. Here the question is saying that the longest phase in the M phase of the cell cycle is. Okay, अगर हम बात करें M phase of the cell cycle तो इसमें longest phase कौन सा होगा? Fine, हमारे पास चार options given है. First one is telophase, metaphase, prophase and anaphase. Fine, अगर हम बात करें the key concept that we are using in this question, the key concept here will be the M phase. Okay, the key concept here will be M phase, also known as the mitotic phase. Okay, it is mitotic phase. जब भी हम बात करते हैं सेल साइकिल की, okay, so we can say the cell cycle is divided into two different steps. Okay, जो पहला phase होगा that will be the interphase. Okay, एंड जो नेक्स्ट फेज होगा दैट विल बी द एम फेज या कह सकते हैं माइटोटिक फेज. सो दीज टू आर द मेजर फेजेस दैट कुड बी सीन ड्यूरिंग एनी काइंड ऑफ सेल साइकिल. सो इंटरफेज बेसिकली होता क्या है, वी कैन से ड्यूरिंग दिस बेसिकली द सेल प्रिपेयर इटसेल्फ. सो यहाँ पे प्रिपरेशन होता है. वी कैन से इन दिस फेज जो सेल है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है टू अंडरगो द सेल डिवीजन या टू अंडरगो द माइटोटिक डिवीजन. एंड जो इंटरफेज होता है सेल साइकिल का ये बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है. वी कैन से इट इज टेकिंग अराउंड 95% ऑफ द जनरेशन टाइम. अगर हम बात करें एम फेज का या माइटोटिक फेज का, वी कैन से इट इज टेकिंग ओनली 5% of the generation time, and this is the phase when the cell will actually divide. तो यहाँ पे actual cell division हमें देखने को मिलेगा during this M phase. Now अगर हम बात करें what is the total duration of a cell cycle, तो total duration किसी भी cell cycle का होता है 24 hour, जिसमें से 95% time is for interphase, that is approximately 22 hours वो इंटरफेस में रहेगा. एंड द रिमेनिंग 5% और वी कैन से द रिमेनिंग 2 hours इट विल बी देयर इन द एम फेज. नाउ अगर हम बात करें एम फेज की, तो एम फेज अगेन इज कंसिस्टिंग ऑफ 4 डिफरेंट फेजेस. फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी द प्रोफेज. ओके, देन वी हैव मेटाफेज. आफ्टर द मेटाफेज वी विल हैव द anaphase, and the last phase or last stage in case of mitotic division will be the telophase. So these are the 4 major stages in case of the mitotic division. अगर हम बात करें प्रोफेज के एग्जैक्टली यहाँ पे होता क्या है, वी कैन से ड्यूरिंग द प्रोफेज द क्रोमोसोम कंडेंसेशन विल टेक्स प्लेस. ओके, सो यहाँ पे क्रोमोसोम कंडेंसेशन होता है एंड माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन यहाँ पे इनिशिएट होता है. अगर हम बात करें मेटाफेज की, सो ड्यूरिंग दिस स्टेज व्हाट हैपेंस, द क्रोमोसोम्स बेसिकली अलाइंस देमसेल्फ इन द सेंटर ऑफ द सेल. यहाँ पे क्रोमोसोम्स अपने आप को अलाइन करेंगे इन द सेंटर ऑफ द सेल. When we talk about anaphase, what happens during this stage? We can say during the anaphase, the cell separation takes place, or we can say the pair of chromosome will separate from each other. Okay, so यहाँ पे क्या होगा, the pair of chromosome separates in order to produce the two identical chromosome. So it will give rise to two identical chromosome. Fine. तो यहाँ पे क्या होगा, जो दो pair of chromosome है, they will start moving towards the pole, and that is why resulting into two identical chromosome. अगर हम बात करें टीलोफेज की, तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा. ओके, सो हियर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन विल स्टार्ट, एंड दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल स्टार्ट सराउंडिंग द क्रोमोसोम. ये क्रोमोसोम को सराउंड करेगा एंड देयर बाय लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अ वेल डिफाइंड सेल. तो ये जो चार फेजेस है, ये सारे जो चार स्टेजेस है, दैट विल हैपन ड्यूरिंग दिस एम फेज. नाउ हमें बताना है विच इज द लॉन्गेस्ट फेज. तो अगर इन चारों की बात करें, सो वी कैन से हियर द लॉन्गेस्ट फेज विल बी द प्रोफेज. जो प्रोफेज स्टेज है दैट विल बी द लॉन्गेस्ट अमॉन्ग ऑल द 3 डिफरेंट स्टेजेस. तो जो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा
that will be prophase. Okay, so prophase is taking the longest duration of time when we talk about this M phase. So the correct answer here will be option C, that is prophase will be the final answer for our question. I hope you understood the question well. Best of luck.